સખી ફેશનના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। આજે આપણે વિવેકને મૂકવા ગયા હતા। વિવેકને મૂકીને પછી માર્કેટમાં ગયો, બકાલું જોઈને બકાલું લેવાની યાદ આવી, પણ બકાલું બનાવવાવાળી જે અહીં અત્યારે હાજર નથી, તો પછી આપણે બકાલું લેવાનું વિચારવાનું ઓછું કરીને મંદિરની તરફ પ્રયાણ કર્યું। પછી કોઈ હતું નહીં તો લીધું નહીં, સીધા કૃષ્ણ ભગવાનના મંદિરે, બેઠકજી મહારાજના મંદિરે ગયા, મંદિરે દર્શન કર્યા। આજે તો અમારા કૃષ્ણ ભગવાનનો માહોલ કંઈક અલગ જ હતો, કારણ કે અમારે ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર બહુ એટલે બહુ બધા નારિયેળીના પાન અને કેળના પાનથી કૃષ્ણ ભગવાનને સજાવ્યા હતા। કૃષ્ણ ભગવાન બહુ એટલે બહુ મસ્ત લાગતા હતા। પછી મામાની ગાડી લઈ અને આપણે એક્ઝિબિશનમાં સીધા ઉપડી ગયા। એક્ઝિબિશનમાં થોડા નાના ભૂલકાઓ હતા, તો એને બધાને આપણે એક્ઝિબિશનમાં વિઝિટ કરાવી અને એના વિડીયો ઉતાર્યો। And fond of food, you might have enjoyed the food over here. आपने सूरत का खाना भी खाया होगा। विंटर में हमारे यहाँ स्पेशल खाना होता है। कई प्रकार के फूड हमारे सूरत में विंटर में बनते हैं, जो देश में कई और जगह नहीं बनते और मिलते भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ और सोचता हूँ कि आपने ये फूड का भी एंजॉय किया होगा, सिटी का भी मजा लिया होगा, क्योंकि आप नंबर 1 सिटी में सूरत में हैं। एक बार फिर आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये सब सुनने के बाद सबको अवार्ड मिले और फिर जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करेंगे। के बाद फिर से एग्जीबिशन में और फिर तो खाना खाने गए। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा आइसक्रीम का प्रसाद भी लिया, और उसके बाद एक दोस्त मिल गया था जो तमिलनाडु से था, और उससे बात किया। वो भी हमारे वीडियो को लाइक का सब्सक्राइब करने को बोला। फिर हम चले गए बाहर। तो बाहर जाते जाते हमने जो व्यू देखा है वो सब आपको दिखाना चाहता हूँ। ये व्यू सबसे अच्छा है, हमारे सूरत का बेस्ट लोकेशन है। जो हमारे अमरोली वाला रोड है, वो गजेरा सर्कल साइड जाता है ना, जो उस पर पुल कैसे फिर लालू सबसे बेस्ट ये मूवी थोड़ा सा सैडली मूवी है और ये थोड़ा सा इमोशनल है। तो मूवी देख के हमने एंजॉय किया और बाद में फिर हम घर को चले गए। ये मूवी देखने के बाद सो गए। मूवी का हैप्पी एंडिंग हुआ और फिर हम घर चले गए। जय श्री कृष्ण, जय माताजी। अपना ब्लॉग जो માટે અભી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। જય માતાજી। મારો બ્લોગ કેવો લાગ્યો મને જણાવજો, લાઈક કમેન્ટ અને શેર કરજો। જય માતાજી।